Okay, so here I defined a method, and in this method I've given some according to the rating I've given good, neutral, and a bad thing. Now what I'm going to do here is just prepare one more count plot, and according to this count plot, just take x rating. Okay, ratings, how many ratings are there? It's a very simple count plot. Just take on x-axis, that is the rating, how many ratings are there as per my initial data set or the data frame. Okay. Sir, here score means the data set it is coming from a rating, right? See, Correct? yeah, as per the rating. Yeah, score is the rating. Okay. If the score is Okay. more than three, so good, and Got it. neutral and bad. Okay. Yeah. So I have prepared the count plot here. You can see that one has been coming how many times, and then two is coming how many times, three and four and five, as much times they are coming. So this is a count plot for the rating. Then the next thing is, I need to apply rating. This method apply over the ratings. Okay, because I don't need one, two, three, four. I need over this my rating column. I need to apply this rating, this method which I have created. Okay, so when I give score as an input, so score is this rating, one or two or three whatsoever. Okay, I give here as an input to my rating. Okay, and it will automatically convert it into your good, bad, and neutral. Okay, if the score is more than three, so it will be good, three neutral, and less than three, it will be like bad. Okay, so it will automatically convert it, and let's see here, all converted. Again, I have drawn the count plot, so you can see this is again I have created a count plot for that. Same, nothing else, just converted my rating into good, bad, and neutral, and just created a count plot. Pura process same. Now the next thing is length, review length of the reviews. Okay, so I apply a length. Okay, apply a length for reviews. Okay, this method apply a length for the reviews. So accordingly I created a distribution plot. Some reviews can be lengthy, some reviews are average size, some reviews are less than that particular length. Okay, so I have applied length just to find out the length. One more column I have created, that is the length column. Okay, so whatever be the length of my reviews, I am just putting it into that particular column, and I creating the distribution plot as per the length. So on x-axis I'm taking the length. Hue I can take as a rating. Okay, hue I can take as a rating. Kernel density estimation, KD plot, I'm going to prepare. This is what is the same. Okay, which you have seen. So for your good, bad, and neutral ratings, this is the length. Okay, so good, the length of your review is more. For the good, you can see that the area under this curve is more for your good ratings. This is the area you can see, high density. But for the neutral and for the bad, the area is less. For neutral it is very less. For bad it is just how in between the good and the neutral. Okay, so this is what we have done. Distribution plot for the length. What is the length of the review? This is automatically created, and one more column I have created, that is the length column for that. Okay, so this is the disk plot related to your length. Okay, next one is something new for you, that is the strip plot. I hope you are hearing this plot for the first time. So strip plot, it is a complementary to the box plot or the volume plot, and you very well know about how, for what reason the box plot has been created. So the box plot or the volume plot, whatever we can say, that means if we need to find about the what to find in the box plots, what we do with the box plots, Outliers to outlier. detect Yeah, outliers. to detect outliers. Okay, so strip plot is been it's a complementary to the box plot or the volume plot, and where all the observations are shown along with some representation of the underlying distribution. Okay, this is the this is for this reason only I need to draw the strip plots, where all the observations are shown along with some representation of the underlying distribution. Okay, so it is used to draw a scatter plot based upon a category, whatsoever. What is the category? What is the feature? Accordingly, we need to draw the strip plot. So you can see it's just like scatter. You can see some scatters also. So good, bad, good rating, bad rating, and then neutral rating. You can see that some scatter plots are also been available. Okay, so it's just like a complementary to your box plots for outlier detection or whatsoever we can do. So here I am going to draw this strip plot. Okay,
So good, bad, and the neutral, you can see that this is the length of your good, this is the length of your bad rating, and this is length respectively for your neutral ratings. And there are some dots, some points which are outside this also, bad rating, something like that. Okay, so here we have drawn the distribution. Basically this is a distribution only. Okay, so let me again uh, define you what is a strip plot. Strip plot here, we need to draw this strip plot to check all the observations, to show them along with the same representation. So here the representation is all same for them. Okay, you can see that all the three, bad, good, or neutral, whatsoever, they are all having the same representation with respect to your underlying distribution. And basically it has been used to draw the scatter plot based upon the category. So this is kind of a scatter plot only. You can see some of the points which are seen on the top and above also. So this is a strip plot. Okay, so either you can draw other kind of plots also. It's not like I've done only this. You can use other plots also, but these are some new plots. Okay, today is a day of data visualization only. In morning session also some different visualizations were there, and in this session also they are having different visualizations. Okay, so strip plot, then point plot. Okay, if I need to plot any point. Okay, so as I did for the line plot, similarly if I need to draw any point, so I can draw the point, point plot. Okay, so this method, that is a point plot, it is used to show point estimate. Okay, point estimate and confidence intervals level. Okay, using the scatter plot. Okay, so a point plot basically represents measures of central tendency for a numerical variable. Okay, so here I'm drawing the point plot for these good, bad, and neutral ratings. Okay, average of review length for each rating. Okay, average values for all these ratings, good, bad, and the neutral. Okay, so here X is the rating, Y I'm taking the length. Color you can define from anything. Only the one point which you should be knowing is what is point plot, what this method do. This is what you should know. Why I'm going to create this kind of plot, this is what you need. Why I'm going to draw line plot, why I'm going to draw point plot, why I'm going to draw count plot, for whom I'm, for which feature I'm going to draw this is something which you should be knowing. Then comes your methodology कि यार कौन सा लगा रहे हैं, क्या होना चाहिए. तो ये तो सिंपल है, सिंपल सी I just written point plot. Okay, so point plot basically it represents the estimate of central tendency for a numerical value. Okay, central tendency for a numerical value by the position of your scatter plots. Okay, and to be very much in depth, it provides indication of uncertainty around the estimated values with the help of error bars also. Okay, so point plot again, I guess it's just like a new thing for you. Okay, so here we are drawing points, and these points represents central tendency of a numeric variable. So now the question came, sir, what is the central tendency, sir? Your in previous session also you talk about central tendency. Okay, here also you're talking about the central tendency. So this is an statistical concept of central tendency. What is the central tendency? See, what I know is, let me first tell, and then you guys can suggest me what is better. So central, General tendency, yeah, sir. yeah, it is a General tendency is a measure of measure of. statistics which we can done the statistics Okay. See, which we can done mean, median, and mode. Mean, median, and mode. Measures of these are only mean, median, modes. These are the measures of central tendency. Okay. So basically, central tendency, it's a statistical measure only. Okay, that represents a single value of the entire distribution of a data set. So how your data set has been distributed. So here a point plot, I'm showing you the point plot. So either I'm showing you the mean, either I'm showing you the mode, or either I'm showing you the median, whatever. So by this point only I'm showing you everything. Okay, point so this point is representing this central tendency. Okay, whatever the point which I'm been showing here, this has been represented by your point plot only. Okay, so that's why I did mention
that it is related to your estimation of your central tendency for a numerical value. Okay, wherever these points are present, it has been shown by the point plot. Now the next thing Sir, is, yeah, yeah. sir, as I know, Hmm. whether please tell me if I'm right or wrong. Hmm. Uh, if we have numeric values and we are using box plot, Hmm. suppose we have some price rate or we can say that percentage value. Hmm. Suppose and in box plot, some students are having percentage around 50, and one student got percentage of 90%. Hmm. Then then definitely we will eliminate that, or so that our model will not be disturbed. But in this project, Hmm. we got our in a strip plot, we have got some points on very higher value. Then what we are going to do about See, it? actually, very some points with higher values, but not that much. Okay, so we are not doing any, we are not creating any kind of box, but you can do that. You can use box plots here also, because a strip plot is something you can see that some points are there, but the basic phenomena of detecting outlier and removing the outlier comes with your box plots only. Okay, so Okay, there so you are having approach, so you in can draw strip, box plots. Okay, and then you can eliminate these points. However, there are not that much points in this data set. You can see very less, so we can consider them. It will not going to affect a much in your model training. okay, so there is no need to eliminate them. No need, no need as such. But the thing is, you please draw box plots from your side, and let check with other technique also whether we are going correct or not. Okay, are you Sir, getting? actually, I like this strip plot very much, Hmm. so I'm not going to draw Okay, box plot. okay. Uh, so just my only point is that should we have to eliminate them or not? No, There is no need. Okay, no and need. sir, one more doubt from my side. Hmm. In my coursework during PhD, Hmm. they taught us about some kurtosis and skewness that you have to check. Hmm. So is it applicable here also? What to check for what? Skewness, kurtosis, whether your Uh-huh. data set is having. So Uh-huh. is it only applicable for numeric values, or should See, we have numeric, to actually, apply? as per I already told about that strip plot, it is going to check for all the observations which are being available, which are being represented on an underlying distribution. So, as per the distribution of the data. Now, if I talk about your what terms you told me just right now, what terms? What terms you mentioned? Skewness, Okay, skewness. skewness, Skewness and Okay, kurtosis. so if it is being belonging to the distribution of the data, whether skewness or whatsoever, so you can apply a strip plot over it. Okay, basically it has been used to draw scatter plot based upon the category on which you are applying for. Okay, so it's like a scatter plot. Okay, so as per your problem statement, you can apply our skewness or just all this, statistical terminologies, whatever you want to be. So you can apply on those observations. Okay, just to check the distribution, just to check the distribution. Okay, whether they are being like na similar, compatible, as I already told, as done on box plot, similar things can be done on the strip plot. Same thing is happening here also for the checking the distribution of the observations. That's it. Okay. Okay, okay. And so might be that sir was from MBA background, Hmm. and that time they told us that you have to normalize your data Hmm. also. So is that applicable here? See, why to normalize the data, and what reasons you need to normalize the data? Sir, actually, I don't know. See, That's why normalization. See, I'm asking. normalization. We did see one in project also. We did in the morning. Where normalization, we use some scaling techniques. Okay, some scaling techniques has been used for the normalization. We use min max scalar or standard scalar or something like that. And the reason for the normalization is if in our data set we are having the features of different units. Okay, then we need to perform the scaling, and then we need to perform the normalization. Are you getting my point? If you are available, for Yes, sir. example, if you are available with mass, volume, density.
in your data set. So mass is in kg, volume is in meter cube, density is some some different unit, mass upon kg, and some kg upon mass upon volume. So it will be kg upon meter cube or whatsoever. If in your data set you are available with different features with different kind of units, so obviously you need to perform the scaling, and that scaling process is ultimately it's a normalization. That means you need to bring all of them on a same scale. That is a normalize, just normalize all these values. Are you getting my point? This is called as a normalization. We haven't done any Yes, sir. normalization here. यहाँ कुछ जरूरत नहीं Okay, लगी हमें. For so in NLP there is no need हाँ, for no all need. this. हाँ, उसके लिए जरूरत ही नहीं Yes, पड़ती. It's a good sir, idea. because I think for my references, हम्म if the data is normally distributed or a Gaussian distribution, हम्म then we have to use the Q and kurtosis, हम्म. not in NL. हाँ So हाँ. ओके, तो यहाँ आपको एज पर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द डेटा. ओके, अब डेटा डिस्ट्रीब्यूशन अगेन स्टैटिस्टिक्स पर चला गया. ठीक है, तो पॉइजन्स डिस्ट्रीब्यूशन, गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन. ओके, तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द डेटा, हाउ इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द डेटा हैज बीन हियर. अकॉर्डिंगली यू नीड टू अप्लाई द टेक्निक. Is sir, it for text data also we need to do normalization. सी अभी यहाँ तक तो लगा नहीं, मुझे तो नहीं लग रहा वी नीड टू डू एनी काइंड ऑफ नॉर्मलाइजेशन, क्योंकि यहाँ यूनिट्स तो होते नहीं कुछ अलग no, अलग. no, no, यहाँ तो कुछ यूनिट है नहीं अलग, तो वी आर नॉट गोइंग टू अप्लाई नॉर्मलाइजेशन. डू यू फाइंड एनी डिफरेंट Okay. यूनिट्स हियर? वी आर जस्ट we अवेलेबल विद द have, टेक्स्ट that is an object type, or No. just only Yeah. numerical value, that is review rating, that is simple numerics. There is no Okay. requirement of normalization here. Okay. Okay, so the kind of distribution of the data, Pami, for you. Okay, so as per the distribution you need to apply those techniques. ओके, और ये जो स्ट्रिप प्लॉट था ये उस डिस्ट्रीब्यूशन को रिप्रेजेंट करेगा, बस इतनी सी बात है. ठीक है, तो जो बॉक्स प्लॉट है बस वो रिप्रेजेंट, इट इज बीन रिप्रेजेंटिंग हाउ योर डेटा हैज बीन अवेलेबल इन अ प्लेन. ये बता रहा है. अब उसमें से कितने आउटलायर हैं, नहीं है, क्या है इसकी डेंसिटी, ये डिस्ट्रीब्यूशन पूरा बता रहा है. इज इट ओके पमी? Yes, sir. So okay, fine, let's go ahead. So the next thing is कि maximum thumbs up कितने आ रहे हैं, how many thumbs up I am available with. So max कितने, 2 3 4 whatever be there. Okay, so max thumb up I have applied to this variable. Max value निकालूंगा मैं, max कितनी कितनी वैल्यू थी. एंड देन व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज आई एम गोइंग टू प्रिंट df thumbs up इक्वल टू max thumb. तो किस पर, किस रिव्यू पर सबसे ज्यादा लाइक आए, ये निकालने का तरीका. एंड ऑन व्हाट रिव्यू, इन विच रिव्यू यू आर गेटिंग मैक्सिमम लाइक, मैक्सिमम थम्स अप, मैक्सिमम लाइक आए, तो ये वाले रिव्यू पर आते हैं. दिस ऐप इज वेरी गुड, इट इज अ गुड, एक्सप्लोर न्यू सॉन्ग्स, हाउएवर आई टुक आउट द स्टार बिकॉज ऑफ फ्यू रीजंस, एंड ये सारी चीजें, ये रिव्यू. ऑन दिस रिव्यू यू आर गेटिंग द मैक्सिमम थम्स अप. Okay, now if you want to find the mean of the thumbs up, okay, that is likes, जितने उसका मीन निकालना तो मीन निकाल लीजिए और उसका बार प्लॉट बना दीजिए. sns डॉट बार प्लॉट, y रेटिंग है और x टोटल थम्स अप. ओके, ओरिएंटेशन हॉरिजॉन्टल है. ओके, सो यू कैन, ये तो बहुत सारे फिर आपके पास पैरामीटर्स आ जाएंगे, एच कलर कितना है, पैलेट कितना है, सी आई, ये जो भी है, देयर कुड बी मेनी पैरामीटर्स कैन बी अवेलेबल. सो यू नीड टू ड्रॉ बार प्लॉट. एक बार प्लॉट हम बनाएंगे, बार प्लॉट रिलेटेड टू योर व्हाट, मीन थम्स अप. मीन कितना है तो मीन आप निकाल लेंगे. देन यू आर गोइंग टू ड्रॉ बार प्लॉट. Y on y axis you are taking the ratings, and on x axis you are taking the total thumbs up. How many total thumbs up you are getting. रेटिंग 1 के लिए, 2 के लिए क्या मतलब, क्या है, गुड, बैड और न्यूट्रल, उनके लिए क्या क्या आपका आ रहा है, वॉट एवर यू आर गेटिंग, तो ये आप क्या कर देंगे, ये बना लेंगे. हियर यू आर गोइंग टू गिव द टाइटल, आप कोई टाइटल दे रहे हैं उसके लिए. देयर इज वन मोर थिंग, plt डॉट axvline, this line. Okay, so axvline, this line is basically, this is a function to add the vertical lines across the axis. इसके लिए यूज होती है ये मेथड है जो. तो मुझे क्या करना था, मीन मैंने कैलकुलेट कर लिया था ऑलरेडी. मीन की मुझे लाइन बनानी थी यहाँ पे. आई नीड टू ड्रॉ लाइन फॉर द मीन. तो ये आप ये रेड कलर की डॉटेड लाइन देख रहे हो ना, ये इसके कारण बनी है, ये axv लाइन के कारण. तो ये पहले कभी बताया नहीं है, अब बहुत सारे मेथड्स आर अवेलेबल, जब कोई चीज सामने आएगी तो मैं डिस्कस करूंगा. तो axv लाइन है, ये लाइन, दिस लाइन हैज बीन क्रिएटेड बिकॉज आई फाउंड द मीन. सो इफ आई नीड टू ड्रॉ आर अबाउट एक्सिस, एक्सिस के अबाउट यदि आपको कोई लाइन बनानी हो तो वो आप इससे बना सकते हो.
तो रेड कलर से मैंने उसको हाईलाइट कर ली, डॉटेड से बनाया है, एल एस इक्वल टू डॉटेड, तो यू कैन सी अ डॉटेड लाइन हियर। तो ये तो रेटिंग तो आ ही रही थी, गुड बैड न्यूट्रल ये आ ही रही थी, मीन के अबाउट मैंने लाइन बनाई है। ठीक है, तो मीन से कौन कितना ऊपर जा रहा है नीचे, गुड रेटिंग्स बिलो मीन है, बैड मीन को क्रॉस कर गया, न्यूट्रल मीन को और ज्यादा ही क्रॉस कर गया। ओके, सो दिस इज हाउ यू कैन एनालाइज अ ग्राफ। ओके, नाउ द नेक्स्ट थिंग इज कि स्ट्रिप प्लॉट फिर बनाया है रिलेटेड टू द रेटिंग एंड द टोटल थम्स अप। तो ये स्ट्रिप प्लॉट है, यू कैन सी कि किस तरीके से यहाँ पर स्ट्रिपिंग, अगेन वो कैसे पॉइंट्स आपको दिख रहे हैं, स्कैटर प्लॉट है, अल्टीमेटली इट विल बी लाइक इट्स अ स्कैटर प्लॉट, स्ट्रिप स्कैटर प्लॉट है पूरा। ओके, रिलेटेड टू द रेटिंग एंड द टोटल थम्स अप ये बनाया है हमने। फिर अगेन व्हाट आई डिड इज, पॉपुलर वर्ड्स कौन से जिनको ज्यादा रिव्यू मिला है, गुड वर्ड्स, गुड रिव्यू वाले ऐसे कौन से हैं, देखिए क्या करेंगे, डीएफ रेटिंग इक्वल टू गुड, यानी कि मैं क्या कर रहा हूं, रेटिंग जिनको गुड मिली है, ओके, वॉट एवर द रेटिंग्स इज बीन इक्वल टू गुड, मैं उनके रिव्यू, वही वाला रिव्यू उठा रहा हूं, उन्हीं रिव्यू को उठा रहा हूं डेटा फ्रेम में से, जस्ट पिक ओनली दोज रिव्यूज हुज रेटिंग आर गुड, बस ये इसका मतलब ये होता है ये। अब ये समझना पड़े, अच्छा ऐसे याद नहीं रहता, दिस इज नॉट फॉर द रिमेम्बरेंस, दिस इज नॉट फॉर द मेमोरी, बट एक बार आपके सामने ब्लॉक ऑफ कोड है, इफ यू वांट टू वर्क अपॉन एनी एनएलपी प्रोजेक्ट समथिंग सेंटिमेंट ऐसे कुछ करना चाह रहे हैं, सो दिस इज समथिंग यू कैन डू, तो ये याद नहीं रहेगा लेकिन इट्स मैटर ऑफ प्रैक्टिस। तो आपने से गुड वाली रेटिंग निकाली और वर्ड क्लाउड बना रहे हो उसे गुड का, हाउ, मैक्सिमम वर्ड्स अगेन वो 1000 ले लो चाहे 10,000 ले लो, आता इतने तो थे नहीं, मैक्सिमम वर्ड्स 1000, फॉन्ट साइज यू कैन डिफाइन, हाइट एंड विड्थ यू कैन डिफाइन, कोलोकेशंस आपने इसको फॉल्स कर दिया, सिमिलर वर्ड्स को हटा दिया आपने, खत्म करा, बैकग्राउंड कलर और कलर मैप आपने कुछ भी दे दिया, जनरेट कर रहे हैं गुड, ज्वाइन गुड, तो ये सिंटेक्स होता है पूरा वर्ड क्लाउड का, कहीं पे भी किसी भी ट्यूटोरियल पे चले जाओ कुछ भी देख लो, ये सिंटेक्स है। अब इसमें व्हाट पैरामीटर्स यू नीड टू कीप, ये आपके ऊपर है कि मुझे फॉन्ट साइज रखना है मिनिमम, हाइट और विड्थ देनी है अपने हिसाब से, नहीं दोगे तो बाय डिफॉल्ट ले लेगा, ये तो बढ़ाने का है, ये तो कोड बढ़ाने के तरीके हैं, इसमें क्या करना है डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो इट डिपेंड्स अपॉन यू कि क्या क्या पैरामीटर रखना है। ठीक है, जनरेट करना है मुझे वर्ड क्लाउड रिलेटेड टू द गुड, इसके हिसाब से मुझे कोड जनरेट करना है, सो यू कैन ये आपका वर्ड क्लाउड बन गया गुड वर्ड्स के लिए, ये गुड के अंदर कैटेगरी में आया है। सिमिलरली अच्छा, टॉप वर्ड्स गुड, और गुड में टॉप वर्ड्स कौन कौन से थे ये भी पता लगा लो, ये आपने ऑलरेडी मेथड टॉप वर्ड्स बना रखी है, ऑलरेडी क्रिएटेड दिस मेथड टॉप वर्ड्स, okay, this is already been there, okay, so these are the top words कि app, music, song, Spotify, love, okay, तो ये आपने ऑलरेडी मतलब ये टॉप वर्ड ऑलरेडी यू हैव ऑलरेडी क्रिएटेड दिस मेथड, तो जस्ट गुड इसमें रखना है जो गुड वर्ड्स वाला है, एंड अकॉर्डिंगली यू आर गेटिंग these these words are the top words which are appeared or which are frequently appeared, ये कहाँ से निकले, यहाँ से निकले, you can see in the word cloud दिख ही रहा है, ऐप सबसे बड़ा दिख रहा है, ऐप, Spotify is also having a huge means large size, song, love, music, these are good, these are having good sizes, so the frequency of occurrence of these words in good reviews, ये यहाँ से in good review, जिनकी रेटिंग गुड थी उन्हीं के रिव्यू निकाले, बस वो वाले रिव्यू वाले सेंटेंसेस लिए मैंने, दैट्स इट, उससे बन गया, तो गुड का बन गया, उसी तरीके से न्यूट्रल का बन जाएगा, मुझे आई थिंक उसको समझाने का वापस कोई सेंस बनता नहीं है। ओके, सो न्यूट्रल यू कैन क्रिएट फॉर द न्यूट्रल ऑल्सो, अगेन यू कैन क्रिएट इट्स वर्ड क्लाउड, यू कैन क्रिएट इट्स टॉप वर्ड्स विच आर यूज्ड इन द न्यूट्रल, तो सॉन्ग, ऐप एंड ऑल दीज थिंग्स, स्पॉटिफाई ये न्यूट्रल में भी है। सिमिलरली बैड के लिए भी कर सकते हो, अगेन यू कैन प्रिपेयर फॉर द बैड रिव्यूज ऑल्सो, तो बैड रिव्यूज जिन जिन की रेटिंग बैड है वो ओनली टेक दोज रिव्यूज एंड क्रिएट अ वर्ड क्लाउड, सेम सबका कोड सेम है, कोई अलग नहीं है, ऑल कोड इज सेम, बस ये ज्वाइन जब करोगे ना तो बैड, न्यूट्रल और गुड करना है, बस इतना काम है, बाकी सब सेम है, कुछ नहीं करा, ऑल कोड इज सेम। ओके, सो ये बन जाएगा, तो टॉप बैड वर्ड्स भी निकाल देंगे, ये भी हो गया। फिर उसके बाद क्या करना है, ये जब जितना मुझे टास्क परफॉर्म करना था थोड़ा सा वो मैंने करा, अभी कोई प्री प्रोसेसिंग अभी कुछ कुछ करा ही नहीं है, वॉट एवर द डेटा सेट अवेलेबल विद मी उसी में मैंने कुछ मॉडिफिकेशंस, आई डिड सम मॉडिफिकेशंस ओवर इट, आई प्रिपेयर्ड सम डिफरेंट अदर कॉलम्स, आई डिड एनालिसिस रिलेटेड टू इट, नथिंग न्यू, नथिंग प्री प्रोसेस इज समथिंग एक्स्ट्रा आई हैव डन, आई हैव नथिंग डन न्यू, जस्ट perform visualizations over my data, so you are only available with 4 to 5 बस इतने 3-4 columns you are available with, but with limited data set also you have
prepared so many visualizations. तो never see कि डेटा बहुत कम होता है, अरे यार 4-5 कॉलम का तो डेटा है, इससे क्या हो जाएगा, इससे कुछ नहीं हो पाएगा, ये देख तो रहे हो क्या रहा है. Okay, so with limited amount of data also, you have created different kind of visualizations. It just only makes a sense that how much expert you are in the skills. Okay, once you are able to understand the data, I already told ki approach kya banegi. This I will let you know ahead. So this is how we are approaching our problem statement. So after performing the visualizations, after performing word cloud, okay, this is what I'm getting. ये मेरा updated, this is my updated data frame जिसमें length is also there, date is also there. Okay, this I have included in my data frame. This is my data frame. Then the next thing is, in from this data frame I'm creating new data frame. From new data frame I just want only 3 columns. That means review, rating and the length. Only these 3 columns are required, remaining I don't require. Review, rating and the length, this is only 3 I require. Okay, fine. And then the total length is I can take the total length of my data set, the total word which are present in my data set. Before cleaning I can print how many words are there, because the next thing is I'm going to remove the stop words and all these things, punctuation and everything I'm going to remove. So this is the total length of my words before cleaning. Now data cleaning has been applied. In NLP, data cleaning is a very very important step. Okay, but here let's see what I'm going to do. Print original. Okay, original review, review 7. Okay, review, this is your, if I need to print this particular, yeah, here it is the 7th number review as per my index. This is 7th number review, this is original, this is what has been written. Let's see after stemming what is happen. So stemming is a process I've already told about. Okay, that means I need to collect only those words which are equal to the root word. That is what I need to collect with the help of a stemming process. So here I printed the original 7th number statement, 7th number row statement I printed. Now I created an empty list sentence for word in review dot split. I split them, split each and every word which is present here. Okay, then take English stemmer. Okay, I'm importing English stemmers, yeah, words for the English language only. And append sentence dot append stemmer dot stem word. Okay, so for word in DF review, just perform the stemming and add it to the sentence, performing stem over the words which are present, because I have already splitted the words which are present in a review. That means it is splitted each and every word, and apply stemming over each and every word here and append it to your sentence list. This is what you need to do, and print the stemming and join the sentence at the last. Join all the sentence, perform the stemming and join all the sentence. Then sentence equal to this. Now again I need to perform stemming also, and then I need to perform lemmatization also. I need to show you the difference between these two. This is what I have done, the stemming, and now the lemmatization. I've already told the difference between stemming and the lemmatization. In lemmatization, meaning of the word will be there, significance will be there. However, in case of stemming, it will not there. It's not mandatory to get the meaning of the word. Okay, so again the same approach applied for word in DF review. Split the word, lemmatizer, take word lemmatizer. Okay, then apply lemmatization to the word. Apply lemmatization here. Okay, and append it to the sentence and print the lemmatization, lemmatized words. Okay, so here you can see this is original text. This is your stemmed text. Still, see, this is extreme. So extreme is been extremely. So extreme. Okay, but here you can see lemmatization extremely. You can see slow when change. This is change. This is change. Okay, so storage to external SD card. Okay, I am convinced. This to be purpose, and you can see that Spotify. This is Spotify. This is change issue. Okay, issue of if there any other word with ISSU, it has performed the stemming and only took whether you can see that there is no meaning of ISSU. This is done in stemming. There is no word. Its meaning has been all over. But you can see here issue is retained in lemmatization.
Okay, issue is there in lemmatization. So if this is how you can take solve again stemming, but here you can see that solve is there in lemmatization. So the meaning of the word is being present in case of lemmatization, but in stemming, it if you are having solve, solved, solving, so it will just only pick solv, those characters which are common in these words, just pick only those characters. Okay, that is happens in stemming, but in case of lemmatization, meaningful word will be taken. If it is solve, then solve will be taken, whether you have written solved, whether you have written writing solving, whatsoever you're writing, just take solve. This is happens in a lemmatization. This is the difference between these two. Okay, so we have done stemming and lemmatization for a single statement we have done for this. Okay, yes, Chetan. Yes, sir. Here we can see that lemmatization is much more Effective then. logically Yeah, right than stemming. yeah. Then why? What is the use of stemming? See, what see stemming. What is the use? It's one of the technique here which we need to apply in NLP. Okay, so use is same as what we are doing with the lemmatization also. Both are same, No, just to find the root word for our text. Okay, for but which we are working. Hmm. lemmatization is much more right logically. Hmm. That's why I It's asked. giving it's giving you your the complete word as described. Okay, so stemming and lemmatization both are having their own significance. Okay, if you talk about stemming, stemming is a process that stems or removes the last few characters from the word. This is what you have seen. Okay, and obviously it is incorrect also. Your question came, sir, ये तो incorrect word दे रहा सर, ये तो पूरा word भी नहीं दे Yes. रहा सर, ये तो incorrect है. हाँ ठीक है, इस प्रोसेस में ऐसे ही होता है, इनकरेक्ट वर्ड मिलेगा आपको, लेकिन लेमेटाइजेशन में इनकरेक्ट नहीं वर्ड नहीं मिलता. इन केस ऑफ लेमेटाइजेशन इट कंसिडर द कंटेक्स्ट एंड कन्वर्ट्स अ वर्ड टू इट्स मीनिंगफुल बेस. ठीक है, उसको एक पर्टिकुलर मीनिंग में कन्वर्ट करता है. ठीक है, तो स्टेमिंग और लेमेटाइजेशन में यही अंतर है कि एक में Sir, मीनिंगफुल मिलेगा, एक में मीनिंगफुल नहीं मिलने वाला. ओके, या यस से. sir, can we skip stemming and only apply lemmatization? हाँ, या No, 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 सी no, no. सी इस ये हम क्यों करेंगे, वाई, क्यों हम स्किप करेंगे, वाई वी वांट Because टू स्किप. lemmatization give more, Accurate result. accurate words. No, no. हम्म. No, क्योंकि one example. One is हम्म. हम्म. historical and one is historic. हम्म. We use the stemming. The हम्म. output is historic. हम्म. These stemming. हम्म. After using the lemmatization, historical and history, हम्म. the output word is historic. हम्म. That ठीक is है. the use of stemming and lemmatization. हाँ, अब द क्वेश्चन, कैन वी स्किप दिस प्रोसेस. सी, इफ वी स्किप दिस प्रोसेस, ठीक है, कर सकते हैं स्किप, पमी, नो इशू, वी कैन स्किप दिस प्रोसेस. बट पॉइंट क्या होगा कि व्हेन वी आर गोइंग टू प्रिपेयर द टोकन्स, जब उसको स्प्लिट करके टोकनाइजेशन में करेंगे ना, तो द वर्ड, जैसे अभी साजिद ने बोला सर, वो हिस्ट्री, हिस्टोरिकल, ये अलग अलग टोकन बनेंगे. अगेन फिर वही वही जो मैंने इनिशियली रिपीट करा था ना, कि ये जो क्वेश्चन मेरे सामने है, साजिद ने कहा सर स्टॉप वर्ड क्यों हटा रहे हो, तो जब मैं इनको भी नहीं हटाऊंगा, इफ आई डोंट रिमूव दीज वर्ड्स, तो फिर क्या हो जाएगा, वही प्रोसेसिंग टाइम बढ़ जाएगा. आप समझ रहे हैं क्या हुआ. हालांकि इन Yeah. वर्ड्स का मीनिंग सेम था, द मीनिंग ऑफ द वर्ड्स इज सेम, चाहे आपने हिस्ट्री रखा, चाहे हिस्टोरिकल रखा, चाहे कुछ भी रखा, ठीक है, मीनिंग सेम था. लेकिन क्योंकि आपने लेमेटाइजेशन परफॉर्म नहीं करा, तो क्या हुआ, ये वर्ड भी टोकन के फॉर्म में आपके डेटाबेस में सेव होंगे, भले इनका मीनिंग सेम था. तो ये अलग अलग हो गए, अब ये यूनिक वर्ड्स हो गए, अब इनको भी आप प्रोसेस करिए, तो अगेन वो टाइम बढ़ जाएगा. इसलिए लिमिटाइजेशन और ये प्रोसेस ज़रूरी है करना. Okay, sir. ठीक है, तो टाइम आई नीड टू रिड्यूस, तो ऐसे वर्ड्स को मुझे हटाना है. नेक्स्ट इज योर क्लीनिंग प्रोसेस. अब डेटा क्लीन करना, तो क्लीन करने में आई नीड टू रिमूव द पंक्चुएशन, अपर केस और जो भी कुछ है उन सबको आई नीड टू रिमूव. ओके, तो मैं यहाँ पर उनको रिमूव करूँगा. क्लीन टेक्स्ट, तो स्ट्रिंग डॉट पंक्चुएशन और जो लोअर केस कैरेक्टर्स हैं, ओके, उनमें कन्वर्ट कर दिया जाए. तो वेन एवर आई एम गेटिंग इन अ स्ट्रिंग, आई एम गेटिंग पंक्चुएशन मार्क्स और व्हाट्सो एवर, या मुझे कोई अपर केस स्टेटमेंट्स मिल रहे हैं, तो आई नीड टू ट्रांसलेट देम इनटू लोअर केस. पहले तो उन्हें हटाना है, मेक ट्रांस फॉर देम एंड देन कन्वर्ट इट इनटू लोअर केस, ये करना है मुझे. फिर मुझे स्टॉप वर्ड्स हटाना है. क्लीन टेक्स्ट डॉट स्प्लिट इफ वर्ड, आपको क्या करना है, वट एवर द वर्ड्स विच आर अवेलेबल इन योर टेक्स्ट, पूरी जो टेक्स्ट में जो भी वर्ड्स हैं, पहले तो यू नीड टू स्प्लिट देम, स्प्लिट करिए उन्हें. फर्स्ट यू नीड टू स्प्लिट देम,
एंड जस्ट कलेक्ट ओनली दोज वर्ड्स विच आर नॉट अ स्टॉप वर्ड, बस उन्हीं को रखना है, बाकी स्टॉप वर्ड को भी निपटाना है, ठीक है. आई डोंट वांट टू हैव द स्टॉप वर्ड आल्सो. एंड देन फिर लेमेटाइजेशन करना है. तो अभी तो मैंने सिर्फ एक चेक लगाया था, ये सिर्फ चेक था, एक एक सेंटेंस पे जस्ट ओनली एक चेक लगाया था. अब बाद में फिर आपको लेमेटाइजेशन करना है. द क्वेश्चन विच केम फ्रॉम चेतन सर, हम स्टेमिंग क्यों कर रहे हैं सर, लेमेटाइजेशन ही लगाएं, तो लगा दो, सिर्फ लेमेटाइजेशन ही लगा रहे हैं. क्यों? इफ यू आर रिक्वायर ओनली मीनिंगफुल वर्ड्स तो लेमेटाइजेशन लगाइए, ठीक है. सो यूल गेट द, यू हियर वी आर गोइंग टू परफॉर्म द लेमेटाइजेशन, क्योंकि यदि मुझे मीनिंगफुल वर्ड ही रखना है, मैं स्टेमिंग नहीं Yes, करूंगा, sir. ओके, तो मुझे लेमेटाइजेशन लगाना है, मैंने लगा दिया. फॉर वर्ड इन क्लीन But टेक्स्ट, जो भी आपका क्लीन टेक्स्ट था, जो भी क्लीन हुआ है, जहां से पंक्चुएशन और सारे हटा है, वहां पर हम वी कैन अप्लाई द लेमेटाइजेशन. यस से, both can work, but we can choose या वी and कैन चूज, whatever. हाँ हाँ हाँ, वी कैन चूज, वी कैन चूज, ठीक है. तो लेमेटाइजेशन में आपको मीनिंगफुल वर्ड मिल जाएगा, वहां नहीं मिलेगा. Yes, ओके, sir. बस दिस इज द डिफरेंस. ओके, सो हियर आई एम गोइंग टू परफॉर्म द लेमेटाइजेशन, ये आपका परफॉर्म करेंगे एंड दैट्स इट. तो ये पूरा एक मेथड है क्लीनिंग. तो क्लीनिंग में तो बहुत सारी चीजें होती हैं. क्लीनिंग में हाइपरलिंक को, हाइपरलिंक्स, आई नीड टू रिमूव द हाइपरलिंक्स, देयर आर आल्सो कोड. आई नीड टू रिमूव द डिजिट्स, देयर इज आल्सो, वो भी लिखना पड़ता है. तो आप कुछ ट्यूटोरियल ऐसे देख सकते हैं जहां पर ऑलरेडी ये क्लीनिंग का, ये डेटा क्लीनिंग का, एनएलपी का उन्होंने मतलब कोड दे रखा है. दैट कुड बी यूनिक कोड, आप उस कोड को पिकअप करके अपने कोड के अंदर मतलब यहाँ पर यूज कर सकते हैं. ओके, दिस इज व्हाट यू कैन यूज. तो उसमें हाइपरलिंक्स, योर न्यूमेरिक्स, योर पंक्चुएशन मार्क्स, एक्सक्लेमेशन मार्क्स, सब सब पूरा, ब्रैकेट वैकेट, सब सब पूरा, सबको रिमूव करने का, सिर्फ मेरे पास वर्ड बचे और कुछ ना बचे. लेकिन इन दिस माई रिव्यूज आई डोंट हैव एनी न्यूमेरिक ऑन ऑल दिस थिंग्स, ये मेरे पास था नहीं, तो मैं यहाँ लगा नहीं रहा हूँ. there is some, some very special characters type, हाँ वो हाँ एट द रेट भी नहीं थे, वो थे हाँ हाँ, एट इसमें. द और रेट, हाँ, वो सब 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 हटाना है. नॉट ओनली एट द रेट, कुछ अलग ही स्पेशल कैरेक्टर्स थे. और मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि मैं वेट कर रही थी कब से डेटा क्लीनिंग का, कि वो हाँ आएगा, दिखेगा कैसे रिमूव करना हाँ है उन चीजों को. ओके, बट या देर इज सम, हम फिर से व्हेन अगेन वी आर गोइंग टू डू सम एनएलपी प्रोजेक्ट्स, आपको मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर अभी सिर्फ ओनली पंक्चुएशंस एंड ऑल दिस थिंग्स. सो अब यदि आपका वो भी रहता है, फॉर एग्जांपल एट द रेट एंड डिजिट्स भी रहते हैं, हाइपरलिंक वगैरह भी रहते हैं, तो ऑलरेडी देयर इज अ स्पेसिफिक कोड बीन अवेलेबल टू देम. ओके, तो आप जस्ट ओनली वन लाइन और वन और लाइन स्टेटमेंट्स हैं और उससे वो रिमूव हो जाएगा, कोई इशू नहीं है, नॉट अ बिग इशू. ओके सर, एक्चुअली मैं कुछ ये एनएलपी का ट्राई कर रही थी और मैं वहाँ पे अटक गई थी. तो मैंने स्पेशल ये वर्कशॉप ज्वाइन की थी कि मैं वो चीज़ को देखूंगी वो कैसे होगा. ओके ओके, सी ओनली इसलिए वन मैंने लाइनर्स आर बीन देयर. सो पमे यू कैन मतलब ऐसे भी कंसल्ट यू कैन डू. ओके, ऐसे भी पूछ सकते थे आप. You can use regular expressions हाँ, and then रेगुलर, हाँ, put the रेगुलर pattern. एक्सप्रेशन, यस यस, बिल्कुल सही है. फॉर विजय यू आर Yeah, एब्सोल्युटली करेक्ट. रेगुलर एक्सप्रेशन आरई, yeah, उसके लिए वाली yeah, लाइब्रेरी हमें यूज करना पड़े यदि उसको हटाना है तो. yeah. Use the patterns and then remove that. या यस, ओके पैटर्न. मैम. वी नीड टू यूज आरई, रेगुलर एक्सप्रेशंस. But sir, somehow if I stuck anywhere, then definitely I will contact you. या श्योर पमी, श्योर. Thank you, sir. Okay, so the data cleaning, I will share you the code for the data cleaning. Okay, in which all kind of cleaning has been done. और सिर्फ ऐसे ही मेथड ही बनेगा वहां पर, और कुछ नहीं. It's not a hard and fast thing. Simple, just like this only. Okay, so after performing lemmatization, I need to apply cleaning over reviews. Okay, apply cleaning over the reviews, and then here is your length after cleaning and before cleaning. See, before cleaning this is the length, and after cleaning this is the length. This much words are been available in your review. Okay, this much words, 61,000. This is a big rows data set. So obviously these are your available words. The next thing is I need to take review and the rating. That's it. Okay, and both of them are in your characters. Okay, review and the rating both are in the object data type, so I can take these two. Ratings are also good, bad, and neutral, and reviews are also in those in that particular form, your text form. Okay, so I can take these two. Okay, and what is to be done here is split your data into training and the testing, and the test size is 20%, the training size is 80%. This is what you need to do. Okay, so split your data. Now I'm going to apply my deep learning models. Okay, that is LSTM and all these things. Okay, now
if I talk about LSTM, and the question also came related to the recurrent neural network, that I will put up here in this. Okay, so LSTM, that is long short term memory, and it is a recurrent neural network. Neural network, that means a network which is created because of neurons. Neurons are present on the different layers, and there could be many layers like input layer, output layer, hidden layer, and all these things. Okay, so that is a neural network. So recurrent networks are uh, different from feed forward networks. Feed forward networks, ऐसा नहीं कि बिल्कुल feed forward में क्या होता है, just whatever process in this particular layer, just feed it to the next layer, then feed it to the next layer, वो feed forward. Recurrent में क्या होगा, reply भी आएगा, मतलब पीछे backend पे भी काम करते हैं. ठीक है, this is what happens in a recurrent neural network. Okay, so here I am taking LSTM. LSTM, that is based upon your recurrent neural network. Okay, and यदि आप you want me to give some more description for RNN, तो चलो ठीक है. चलो okay. See, just I'm explaining something about RNN as the question came. See, RNN, here the output from the previous step is fed as an input to the current step. Okay, so in whatever step you are present currently, okay, so the output of your previous step is fed as an input to the current step. Okay, this is happen uh, in a basic neural network. In traditional neural network, if you talk about, all the input and the output are independent of each other. Okay, they are all independent of each other. However, in case of recurrent neural network, there is some dependency. Okay, there is some dependency. Okay, so how this dependency has been there, RNN is basically having a memory which remembers all the information about what need to be calculated. Okay, what is to be done, what is need to be calculated, the complete information has been there in a memory. Okay, it uses some parameters for each input, and it performs the same task for all the input or for the hidden layers to produce the output. Okay, and now if you talk about the working of your RNN, so let's take one just example. For example, we are having one input layer, we are having three hidden layers, and one output layer. For example, this is a network, this is a neural network I have created. One input layer, one output layer, and three hidden layers, this is I have taken. Okay, so each hidden layer will have its own weights, because all the calculation has been done on hidden layers only, because these are the complex layers. Okay, all the weight and the bias are available in hidden layers only. Okay, for example, if in a hidden layer we are having one weight and having some bias, we are having layer in hidden layer we are having, for example, w1 w2 are the weights, and b1 and b2 are the bias. And for the second layer we are having w3 and for example w3 b3 as a weight and the bias. Okay, for your third hidden layer, so w1 b1 first layer, w2 b2 for the second layer, w3 b3 for the third layer. Okay, every layer we are having some weights in the bias. Okay, now what we need to do, if in case of RNN, what is going to perform here, because this is the neural network, this is a kind of a neural network only, but what is recurrence here, what is recurrent here? Okay, RNN convert the independent activation into dependent activation, providing the same weights and the bias to all the layers. ये क्या करेगा, भले ही आपका वेट और बाइस अलग था, लेकिन ये क्या करने वाला है, इट इज बीन गोइंग टू गिव same weight and the bias to all the layers. It reduces the complexity of the parameters, and memorization has been done. every time हम memory रहेगी यहाँ पर, memorization of previous output, याद रहेगा कि यार previously मुझे output क्या मिला था. तो there is one technique in algorithm, data structure in algorithm also, that is called as memoization. तो उसी तरीके से ये यहाँ पर अप्रोच फॉलो कर रहा है, मेमोराइजेशन ये टेक्निक होती है वहां पर. ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पर भी यही काम होता है कि देर इज वन मेमोरी ऑफ द प्रीवियस आउटपुट, क्या मिला था मुझे, बाय गिविंग ईच आउटपुट टू द नेक्स्ट इनपुट लेयर. तो मेरे पास मेमोरी है कि मैंने क्या काम करा था. तो जो आउटपुट आई गॉट फ्रॉम द प्रीवियस लेयर, दिस हैज बीन मेमोराइज्ड, और इसको फिर मैं इनपुट दूंगा, आई विल गिव दिस एज एन इनपुट टू द नेक्स्ट लेयर, ये ध्यान में रखते हुए. ओके, तो ये प्रोसेस कहलाती है
ये जो तीनों लेयर हैं आपके, फॉर एग्जांपल 3 हिडन लेयर्स यू हैव टेकन, सो दीज 3 layers are joined together with that particular weight, and the bias for all the hidden layers is the same, and this will create a single recurrent layer. ये एक पूरी सिंगल रिकरेंट लेयर बन जाएगी पूरी की पूरी. ओके, तो आपके पास यू गॉट वन इनपुट लेयर, वन आउटपुट लेयर, 3 हिडन लेयर्स, तीनों के अलग अलग वेट और बायस थे. ओके, तो जैसे भी आपको वट एवर द आउटपुट मिला, आपने उसको मेमोराइज करा. ओके, यू डिड मेमोराइज टू इट, और जब भी आप उसको नेक्स्ट एज एन इनपुट दोगे तो मेमोरी बनी रहेगी आपकी. ओके, फिर जब नेक्स्ट आपको आउटपुट मिला वो उसकी मेमोरी अलग बनी रहेगी. तो ये पूरा की पूरा ये टास्क रहेगा. सो दिस इज आर एन एन, this is RNN, basically recurrent neural network. Okay, so I think Sajid asked me the question related to the recurrent neural network, I guess. Yeah, sir. Okay, so you know, when you're having a problems related to the sequence or time series, or you are having this kind of problems, so recurrent neural networks, these keeps very much importance. Okay, so here again let me just put some brief remarks over it from my side. A recurrent neural network work upon the time series problems or the problems which require sequential manner. If I need to treat the data in a sequence manner, I need to feed the data in a sequences. So if I need to create a sequential model, for example, and I need to perform RNN over it, so you know there are sequential model comprises of various layers in a stack. This is what we are having. In feed forward neural network, whatever we give as an input, then next that will be output, and then next will be output. This is all connected by one each other. Feed forward neural network. Okay. uh, However, if we give data in a sequence, such that one data point depends on the previous data point. Okay, if one data point is been dependent on another data point, if we just give like that, okay, so what happens? If your data, one input data dependent on another, this is RNN. This is recurrent neural network. If we have data in a sequence such that one data point depends on the previous data point, and we need to modify the neural network to incorporate the dependencies between these data points, RNN comes into picture, and RNN is having a memory. Okay, and it stores the states or the information of the previous input to generate the next output of the sequence. ओके, सो यहाँ मेमोरी डली रहती, मेमोरी रहती कि पहले आपने क्या करा था, क्या इनपुट था, क्या आपको आउटपुट मिला है, वो पूरी की पूरी मेमोरी इज बिन रिटेन, और फिर उसके बाद आप आगे का काम करेंगे. दिस इज RNN. और इसीलिए जो टेक्निक हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं, द टेक्निक विच वी आर यूज्ड हियर, दैट इज LSTM. ओके, लॉन्ग शॉर्ट टर्म मेमोरी. ये RNN बेस्ड ही होता है, लॉन्ग शॉर्ट टर्म मेमोरी. ये रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क के टाइप का ही होता है, लॉन्ग शॉर्ट टर्म LSTM. ओके, सो ये भी आपका RNN के टाइप है. ओके, एंड LSTM कंप्राइजेस ऑफ 3 पार्ट्स बेसिकली. ठीक है, इसमें फॉरगेट गेट होता है, एक इनपुट गेट होता है, एक आउटपुट गेट होता है. 3 गेट्स आर बीन अवेलेबल. अभी डीप लर्निंग के पूरे कॉन्सेप्ट्स, इनर कॉन्सेप्ट्स हैं LSTM. सो फर्स्ट पार्ट इज अ फॉरगेट गेट, द सेकेंड पार्ट इज योर इनपुट गेट, एंड द थर्ड पार्ट इज योर आउटपुट गेट. 3 गेट्स होते हैं इसके अंदर, LSTM के अंदर. ओके, सो हियर LSTM में भी हिडन स्टेट होती है. ओके, हिडन स्टेट में टाइम स्टैम्प होता है. ओके, एंड मतलब करंट टाइम स्टैम्प एंड ऑल दिस थिंग्स आर बीन अवेलेबल इन योर हिडन स्टेट ऑफ LSTM. ओके, सो यहाँ इसको नाम ही बोलते हैं, हिडन स्टेट को ही हम शॉर्ट टर्म मेमोरी बोलते हैं, शॉर्ट टर्म मेमोरी. तो लॉन्ग शॉर्ट टर्म मेमोरी, शॉर्ट टर्म कि आपने जो भी कुछ आप ट्रेनिंग कर रहे हो, वट एवर यू आर डूइंग, तो ये मेमोरी के अंदर सेव है, तभी इसको शॉर्ट टर्म मेमोरी बोलते हैं. ओके, एंड सेल स्टेट, तो हिडन स्टेट शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है, और जो सेल स्टेट है दैट इज कॉल्ड एज अ लॉन्ग टर्म मेमोरी. इस तरीके से ये काम करता है. तो 3 पार्ट्स होते हैं LSTM में. वन इज योर फॉरगेट गेट, वन इज योर इनपुट गेट, एंड वन इज द आउटपुट गेट. तो फॉरगेट गेट का मतलब है भाई गोइंग टू फॉरगेट समथिंग. ओके, फॉरगेट इररिलेवेंट इंफॉर्मेशन. कोई भी इंफॉर्मेशन जो आपने मेमोरी में सेव कर रखी है उसको भूलना बेहतर है. कोई भी अननेसेसरी बातें, ठीक है, उन सबको भूलो, अपनी पढ़ाई पे ध्यान लगाओ. ठीक है, तो दैट इज द फॉरगेट गेट.
इनपुट गेट भाई दैट इज टू ऐड अपडेट न्यू इन्फॉर्मेशन, नई इन्फॉर्मेशन मुझे ऐड करना है अपने अपने उसके अंदर मॉडल में, नई इन्फॉर्मेशन, तो वो उसके लिए सेकंड लेयर, सेकंड चीज होती है इनपुट गेट। और थर्ड इज आउटपुट गेट, यानी कि जो इन्फॉर्मेशन मुझे अगले लेयर पे देना है, ठीक है, दैट इज द आउटपुट। तो तीन पार्ट होते हैं इसके, यही बेसिक स्ट्रक्चर है एलएसटीएम का, लॉन्ग शॉर्ट टर्म मेमोरी। ओके, सो एंड अगेन द थिंग इज, फिर उसमें मैथमेटिकल इन्फॉर्मेशन सारी चीजें आएंगी, पूरी मैथ्स लगेगा यहाँ पर कि क्या इक्वेशन बनती है, क्या इनपुट है, क्या टाइम स्टैम्प है, क्या हिडन स्टेट है, क्या आउटपुट स्टेट है, सारी चीजें। ओके, सो दिस यू नीड टू एक्सप्लोर समथिंग फ्रॉम योर एलएसटीएम के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा, आर्किटेक्चर थोड़ा और समझना पड़ेगा, बट टू बी वेरी बेसिक जो मैं बता सकता हूँ वो मैंने अभी आपको यहाँ पर क्लियर करा। ओके, सो थ्री बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं आर एन एन न्यूरल नेटवर्क के। सिस्टम शुड बी एबल टू स्टोर इन्फॉर्मेशन, ये मैंने पहले ही बता दिया, जहाँ रिकरेंट की बात आती है, मेमोरी की बात आती है, ठीक है। तो ये जो भी कुछ काम होता है लेयर्स के बीच में वो सब स्टोर करा जाता है। और लॉन्ग शॉर्ट टर्म में कैसे क्यों स्टोर करा जाता है, मैंने बोल दिया कि भाई आपके तीन पार्ट होते हैं, एक में भूल जाओ, एक में प्रोसेस करो, अपडेट करो इन्फॉर्मेशन को, तीसरे में जो भी आपने इन्फॉर्मेशन दी है उसको उठा के आगे पुश कर दो, ये एलएसटीएम का काम होता है। ओके, एंड सिस्टम इज रेजिस्टेंट टू द नॉइस, ठीक, फ्लक्चुएशन इनपुट, वो नॉइस वगैरह सारी चीजें, वो तो ऑब्वियसली अनकरप्टेड डेटा भी आएगा ही आएगा। ओके, दैट सिस्टम शुड बी, पैरामीटर्स शुड बी ट्रेनेबल, तो ट्रेन तो करना ही है मुझे, तो यहाँ मैंने वही काम करा। अब देखिए मैंने टोकनाइजेशन करा है। ओके, लेट मी स्टॉप द रिकॉर्डिंग अगेन।